Stop buying everything that you see on the internet. Am I being a hypocrite? Well, no, I'm not. We see every content creator recommending us one or the other product. Even I do that sometimes. And honestly speaking, recommendations are everywhere. Be it our Instagram feed, that mohalle wali auntie, or a colleague जिसे घंटा उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती. So stop believing that shit and I'll tell you why. So the first point is that it's not necessary to buy, which means that we just want to buy that product because everyone else is buying. Be it our favorite content creator, that influencer, maybe our friend, just everyone has that. And हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें भी वो लेना चाहिए, maybe to fit in or just to look cool, या फिर maybe अगर मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं होगा then I'll look less feminine, people will think about me, blah blah and blah. But एक बार खुद से पूछना, do I need it? Is it even going to make any difference in my life? And some people just do not feel the need of using all those products. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं भी यूज़ करें, उनको एक्चुअल में कोई ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि घंटा उनकी लाइफ में उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है. I mean, then why to force yourself and go and buy that product अगर उसके ना होने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर वो आपके पास होगा तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Number 2, fake promise. There are advertisements by influencers and the celebrities who will make you believe that by using this specific product you will get that निखार on your face and in just 3 days. I mean, मुझे इतने साल हो चुके हैं इस दुनिया में आए हुए and you are telling me that 500 rupees की cream which I'm going to buy is going to heal all my skin trauma, जो कि actual में काफ़ी months से चल रहा है, maybe 2-3 साल से चल रहा है, and you're gonna heal that, or that product is gonna heal that trauma, that skin trauma in 3 days. How's it possible? So do not let anyone fool you around and save that money in your pocket. No cream is going to give you that result in just 3 days, and mark my words, it is not going to. Number 3, what might work for me won't work for you. Yes, that's right. जो चीज़ मेरे ऊपर काम कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी perfect हो. You might have seen me mentioning the skin types, hair types, categories, blah blah blah, all that stuff, where I categorize the products for a specific skin type, a specific hair type, a specific people of category who should use that product. That is because scientifically, if you are going to use that product which is not even meant to be used for you, it is not even going to show you any kind of result. So for instance, if you are going and buying that product, let's say a serum for that glow on your face, और उसके ऊपर आपकी स्किन टाइप मेंशन्ड भी नहीं है, वो आपकी स्किन टाइप के लिए वैसे भी नहीं है, एंड स्टिल यू आर यूजिंग इट, सो यू नो what it is going to do? It is going to ruin your skin, it is going to ruin your hair if you are using any hair product, and again वो आपके लिए बना भी नहीं है, ठीक है. तो क्या होने वाला है, रूइन तो होगा ही होगा, आपके पैसे भी गए, आपकी स्किन भी गई, आपकी मेंटल हेल्थ भी समवेयर गई. सो डू नॉट एंड अप रूइनिंग एवरीथिंग जस्ट फॉर दैट लिटिल प्रोडक्ट. Number 4. Now this point is specifically for the anti-hair fall products. I am someone who has experienced a severe hair fall, and believe me, you are not experiencing a hair fall in case you are using somewhere around 80 to 100 strands per day. So that is normal, that much amount of hair, if you are losing it per day, it is completely normal. That does not even count in a hair fall. So stop stressing about that, because जितना आप उस चीज़ पे stress करोगे उतना आपका hair fall और बढ़ेगा. And to be very honest, in case you are losing उससे ज़्यादा hair, मतलब आपको लगता है कि 100 strands नहीं है, 100 से ज़्यादा strands आपके fall हो रहे हैं, so let me tell you that वो भी बहुत सारे reasons की वजह से हो सकता है. Which means buying that anti-hair fall product, the product that has the label of anti-hair fall, that is not going to solve your problem. So I'll tell you one thing. When I got my blood tested, at the time when I was having this severe hair fall, तो जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी उसके अंदर पता लगा था दैट आई एम हैविंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, सो विच वॉज स्पेसिफिकली विटामिन D and vitamin B12, and I was actually doing my cosmetology course, I believe, उस टाइम पे, और तब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी दैट these are the specific nutrients, and in case वो nutrients हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं then also we get that hair fall. So when I got it tested, that proved कि इस वजह से मेरा hair fall हो रहा था.
and I was doing all these night shifts जिसकी वजह से there was actually lack of vitamin D. So I started consuming all those things जिससे मुझे पता था कि मुझे ये वाला specific nutrient मिलेगा. And believe me, that really solved my issue. I'm not saying that anti-hair fall products do not work. They do work, but उससे वर्क करने के लिए उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में वो वाले इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए जो कि 90% ऑफ द एंटी हेयर फॉल लेबल्ड शैम्पूज और प्रोडक्ट्स में नहीं होते हैं. एंड एज माई चैनल सेज ग्लो इनसाइड एंड आउट, विच मीन्स दैट यू शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड एज वेल एंड बी वेरी माइंडफुल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू परचेज फॉर योर सेल्फ. So do not buy everything that says anti-hair fall because it's not gonna work, because it does not contain those ingredients which are going to actually help the hair growth. And sorry to break the bubble, but the anti-hair fall shampoos, they do not work. They do not work the 99% of the times, because आप खुद सोचो, आप उस शैम्पू को सिर्फ और सिर्फ बाल धोने के लिए यूज़ कर रहे हो, सिर्फ बाल धोने के लिए यूज़ कर रहे हो, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो कुछ ऐसा मैजिक करेगा, मैजिकली आप लोगों का हेयर फॉल ठीक होने वाला है. इट इज़ नॉट गोइंग टू डू. प्रोडक्ट्स ऐसे चूज करो जो कि एक्चुअल में वर्क करेंगे आपके लिए, एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. एंड डू नॉट गो ऑन एंड बाय ऑल दोज प्रोडक्ट्स जो कि आप लोगों को इंटरनेट पे दिख रहे हैं, जो कि आपको कोई रेकमेंड कर रहा है. So my friend, buy only those products which you needed, which you think are going to be beneficial for you. And in case you are going to take that product, you're going to buy that product specifically for any skin concern or hair concern, then please take help from someone who has the knowledge of it. Maybe your dermatologist, maybe the cosmetologist, maybe someone on the internet who actually teaches you about all that. Baki, go ahead and buy the products जो भी आपका मन करे in case you want to explore. But this was all from my side.